गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। आपका इस वेबिनार में स्वागत है। वेलकम टू द वेबिनार ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग सक्सेस मंत्रा, and we have with us today Miss Arunima Singh, okay, who will be the speaker for the webinar, and she is going to throw a lot of light on success mantra in the area of social media marketing. So we are going to discuss a lot of things related to Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and YouTube and all. Okay, so all these social media platforms we are going to talk about. Okay, so let us talk about. We are Udan Digital. So Udan Digital is an edtech company. Okay, we have just founded. Okay, and we are currently offering skilling courses in the area of marketing, digital marketing, and social media marketing. And on this platform, we are holding webinars almost every month. So this is the fourth webinar which we are having. तो ये हमारा चौथा वेबिनार है जिसे हम कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग पे 3 वेबिनार किया है। ये हमारा चौथा वेबिनार है जिसमें आज अरुणिमा सिंह जी आपके साथ रहेंगी। तो इसके पहले हम लोगों ने जो वेबिनार किया उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट how to learn digital marketing in 100 days. Then we talked about what are the 7 highest paying jobs in digital marketing. And then we have with us Professor MJ Javier, who talked about Marketing Masterclass 2030. Okay, so we have been talking a lot of things regarding marketing, digital marketing, and social media marketing. Okay, so I will talk about Udan Digital first, and then we'll go for the webinar. Okay, so that it will also benefit you on the whole. So I'll just share my screen and then we continue. Okay, so we are talking about the webinar, that is the social media marketing success mantra. Why? Because we are providing a lot of resources, skilling programs in the area of social media marketing, digital marketing, and marketing. Okay, now what happens? We are talking about Udan Digital. So Udan Digital is India's first do-it-yourself digital marketing. So we are offering digital marketing programs. We are offering social media marketing programs. Okay, so currently we are starting our new batch on 15th of November. Okay, so 15th of November we are starting our second batch of certified digital marketing professional course. The first batch is already going on. That was started on 15th of September. And we are also starting for the first time, that is called social media marketing course. That's a certified social media marketing professional course. So that course we are offering now. So that course is also starting from 15th of November. And social media marketing course is a 50 days online live interactive course. And digital marketing program is a 100 days live interactive program. Okay, so both these programs are available. You can check out our website to find out the details. Okay, and then you can join them if you want to learn and if you want to get a job in the area of digital marketing and social media marketing. So that's what we are talking about. I am Dr. Vijay Prakash Anand. So I happen to be the anchor faculty for all these programs, and I have founded Udan Digital. Okay, and I have got a YouTube channel which is called Marketing by Vijay, which has got around 80,000 plus subscribers. Okay, and it has been watched it has got more than 4 million plus views. Okay, so primarily I talk about marketing, digital marketing, social media marketing. So there are 75 videos which are available on the platform on YouTube. Okay, so there you can learn from. Okay, I am also a visiting faculty too. I am Ranchi. Okay, so this is the channel what I have been talking about, Marketing by Vijay on YouTube. Okay, and these are the topmost videos like marketing kya hai, what is marketing, 4 P's of marketing, marketing और सेल्स में अंतर क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स. तो ये सब अलग अलग वीडियोज है जो काफी पॉपुलर है और उनको कई कई लाख बार देखा गया है. जैसे मार्केटिंग क्या है तो लगभग 8 लाख बार देखा गया है. तो ऐसे करके कई सारे मार्केटिंग के वीडियोज है और डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोज है जो मार्केटिंग बाय विजय चैनल पे उपलब्ध है. इन्हें आप देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. अभी लगभग इसके 82-83 हजार सब्सक्राइबर है
अराउंड 82,000 सब्सक्राइबर्स हैं और ये चैनल काफी अच्छा चल रहा है। ऐसे तो मैं कुछ वीडियो ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाया इधर एक आध साल में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और ग्रो कर पाए हम लोग। Then I have also written a book on marketing that is called Marketing Management and Indian Perspective. Okay, and that is currently in its second edition. Okay, and this book is distributed by Wiley International all across the world, and this book is also available on Amazon. तो Amazon पे ये बुक अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। आई एम रांची में भी ये टेक्स्ट बुक के तौर पे रेफर की जाती है पीजी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए, तो वहां ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक चलती है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको कई सारे इंडियन एग्जांपल्स मिलेंगे, सो आप एसोसिएट कर पाएंगे, है ना। तो मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहें तो इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, ये अमेजोन पे उपलब्ध है। इसके अलावा मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट मास्टर क्लास, ये अब उड़ान डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी लगभग 16,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी इस कोर्सेस में। इन दो कोर्सेस में 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ाई की है और लगभग इसकी रेटिंग काफी अच्छी मिली है, आउट ऑफ 5 अराउंड 4.3 4.4 हमेशा से हाईएस्ट रेटेड ये सब कोर्सेस रहे हैं। तो ये सब तो हो गया कोर्सेस के बारे में। अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं उड़ान डिजिटल के साथ और हम लोग आपको काफी मदद कर सकते हैं हर लेवल पे, यूट्यूब के लेवल पे या कोर्सेज के लेवल पे, और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ऐसे मैंने तो लगभग 7-8 हजार स्टूडेंट को पढ़ाया है डायरेक्टली क्लासरूम में। इसके अलावा लाखों स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड रहते हैं ऑनलाइन, है ना। तो इसी सीरीज में इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उड़ान डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे वेबिनार्स लाए हैं और उसमें हम लोग काफी सारी चीजें करते हैं। और अगर आप उड़ान डिजिटल को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे udandigital.com, या फिर आप मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7318004181 और udandigital@gmail.com पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग अपने वेबिनार की, जिसके लिए हम लोग काफी आभारी हैं मिस अरुणिमा सिंह का। उन्होंने आज ज्वाइन किया है हमें, है ना। आइए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। वो एक रिनाउंड पर्सनालिटी है मीडिया के क्षेत्र में, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्षेत्र में। उनको एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के नाम के आधार पर जाना जाता है। शी इज द वाइस प्रेसिडेंट इन हाउस Live Sorrento currently, and she was the former executive vice president in Social Beat. She was also the business director Wonderman Thompson, and she also worked with Ad Factors, PR, Saatchi and Saatchi. तो ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो कि इंडस्ट्री में है। अगर आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को जानते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री को जानते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ये बड़े बड़े नाम हैं। इनके साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आज आपके साथ अरुणिमा सिंह जी हैं और वो अपने विचार प्रकट करेंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग सक्सेस मंत्राज पे। अगर आइए उनके बारे में और हम जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया था मिरांडा हाउस कॉलेज, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉलेज है, अगर आप जानते हो मिरांडा हाउस कॉलेज न्यू दिल्ली में है। उसके बाद उन्होंने एमबीए किया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से, एंड देन शी आल्सो डिड अ प्रोग्राम विद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। ओके, सो दैट्स द India's almost #1 as far as MBA and other management programs are concerned. That is the #1 institute right now in India, Indian School of Business. So she has done digital insider, executive education, digital leadership and marketing program, and she is currently pursuing PhD, and that's great, because once an industry professional gets into PhD kind of domain, so that will add a lot of value to the academia as well as to the industry. So we are very thankful for you, ma'am, that you are also doing your PhD in the area of impacting CX. CX is the customer experience, we say. CX is customer experience using digital mediums in M&E industry, leading to customer loyalty in Mumbai. And she is doing it from KJ Somaya Institute of Management Study. So that is a leading institute in Mumbai.
Okay, and she has also got many awards. Okay, so few of the awards are Women Disruptor Award 2021. Okay, World Women Leadership Congress Award 2020, Women Economic Forum Award 2020, Super Women Award 2019, and she has been on a lot of forums, public speaking programs, and all. Okay, and I was looking forward to her that she will talk to you one day. Okay, and now she is here with us. So we are very very thankful to Arunima Singh, and now we would like to invite Arunima Singh, and in the honor we would like to plant a tree. So, ma'am, in the honor of you, we are planting a bountiful tree at Thane, Maharashtra. Okay, for the webinar and for the love we have for you. Namaskar. Yeah. Sabko और आपको for giving me this opportunity to come here, and so much of love and respect you've shown me, Dr. Vijay. It's an overwhelming experience. Thank you so much for that. The introduction itself wasn't required to that extent. Tika, I'm still very, very grateful that I have been invited here. And I am hoping that, after this 30-40 minutes of interaction, लोग कुछ सीख के जाए मुझसे. और मैं अपना नाम तो आपको पता ही, अभी नंबर और ईमेल आईडी भी छोड़ के जाऊंगी इन केस फ्यूचर में भी आपको इंटरेक्शन या कुछ सवाल होंगे. ऑलवेज वेलकम जी. So, Dr. Vijay, do you want me to start? Should I start? Yeah, I think you can start. Yeah. Thank you. So what I'll do is मैं video off कर लेती हूँ so that PPT should be seamless. Yes. Thank you. Let me just share my slide. Yeah. And then I can start. Yeah, it's visible. It's visible. I'll take it to the slide mode. So once again, thank you, Dr. Vijay, and very good evening to all my audiences there. Hope you all have had a wonderful day today, and let's do some learning in the evening. So Dr. Vijay has already set up a context as to why we have gathered here, and many congratulations to you, Dr. Vijay, that you've been starting this institute and you're offering courses at a very, very reasonable rate. And I'm sure whosoever has enrolled, अभी तक जिन्होंने enroll करा है, trust me, इस cost पे आपको जो विद्या दी जा रही है उसका वैल्यू आपको बाद में समझ में आएगा when you start applying this knowledge, right? कि ये जो हमने सीखा है, it is just a token of appreciation which you'll be paying to Dr. Vijay, right? So I will start with certain agenda which I have put out here. जो मुझे लगा कि as a build up I should be talking on these topics. इसके अलावा अगर आपको लगता है मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, तो आप either towards the end पूछ सकते हैं, or you'll have to stop me, unmute yourself and then ask a question. I'm happy to address your questions either in between or towards the end, up to you. Because ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाऊं तब तक आप वो सवाल भूल जाए. So I'm absolutely okay, आप मुझे बीच में रोकिए, because I'm here to help you, here to answer to all your queries. So आज के दिन में हम डिजिटल स्नैपशॉट, डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़े नंबर्स जानेंगे, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस कैटेगरी में, इस डिजिटल एंड सोशल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड एंड मोर सो एवर इन इंडिया, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे. बिकॉज दुनिया क्या कर रही है, क्या चल रहा है, what sort of conversion is happening, उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे. थोड़ा उसके बारे में हम देखते हैं कि where the world is heading and more so ever where India is heading. Then we'll talk about social media, what sort of platforms are there, what sort of formats are being used by corporates, or for that matter personal branding also. Then उसका application किस तरह से रहता है. मैंने slides पे ज्यादा लिखा है, but then I will not talk about it. थोड़ा टच बेस करते जाऊंगी, कुछ सवाल होगा I'll address it.
maybe, I will send this across to Dr. Vijay. If people are interested in getting this, I'll be happy to share it with you. Then we'll talk about a little bit of digital trends. It's an ever evolving medium, right? Overnight, आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा. I'm sure आप लोग को सब न्यूज में पता ही चलता है कब फेसबुक 2 घंटे के लिए बंद हो जाता है, कब इंस्टाग्राम बंद हो जाता है. What sort of disruption happening? So it's an ever evolving thing. You will not get to know what will be the next trend, because people have been working on it, and new and new innovations have been coming in. Then, since Dr. Vijay is also into it, and all of you are young people out here, I'm sure you're here to learn and understand that what sort of careers you can get into when you're learning and opting for social media courses and digital media courses. So uska ek मैं overview आपको दूंगी, again touch basing little bit of it, so that you understand the entire ecosystem of social media and where all you can place yourself, basis the ability and strength you have according to the skill set you have. Then also, I will touch base upon some digital and social media courses which is being offered at an affordable rate, but also for executives who would want to aspire for learning from an IIM and all. So which are the courses which are pretty okay, but if you are like wanting to get into a PhD, then there is a different league altogether of colleges, and I'm sure Udan Digital is also wanting to get there. So all the best, Dr. Vijay, to you on that. Then also a little bit of do's and don'ts on social media. See, social media as a personal profile, as a personal handle, I can do whatever I want to, but that also has to be within the realms of policies which we have to adhere to. And then I personally endorse that you should be talking about your work, your achievement on social platforms. There are many people who shy away from not talking, पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो दुनिया को आपके बारे में कैसे पता चलेगी, राइट? डॉक्टर विजय मुझे आई थिंक सोशल मीडिया से ही जानते होंगे, राइट? बिकॉज आई कीप writing about myself, I keep writing about trends, I keep writing about work which is happening in media and entertainment industry. For that matter, अभी मैं health and wellness space में हूँ. So वहाँ पे जो innovations हो रहे हैं world wide, different companies है जो बातें कर रही है. So personal branding is also very important. So going forward, let me talk a little bit about, I'll just take, yes. About where the Indian advertising industry is heading, and this is the latest statistics, and these numbers have been taken from credible sources. And आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे रिपोर्ट है जो 2020 का है. 2021 ऑलमोस्ट हम कहाँ पे हेड कर रहे हैं, एंड 2022 में हम कहाँ जाएंगे. सो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, राइट, 2020 में 56,419 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था बाय डिफरेंट कॉर्पोरेट्स इन इंडिया अलोन, एंड 2021 में वो बढ़ के 62,577 करोड़ हो गए, एंड 2022 में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 70,343 करोड़. Imagine the growth in the advertising industry, and that is happening at a CAGR of almost 12%, right? This is advertising. Advertising comprises of traditional advertising. आप जो टीवी देखते हैं, print media आती है आपके घर पे, magazine, newspapers जो आप पढ़ते हैं. Then outdoor होता है, उसमें जो आपको billboards दिखते हैं, hoardings दिखते हैं, बसेस पे जो एडवर्टाइजिंग होती है, बस स्टैंड्स पे जो होती है, ऑटो रिक्शा के पीछे होते हैं, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग along with digital advertising. And digital advertising is everything to do with your internet. As a lay person, इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो भी एडवर्टाइजिंग होता है उसको डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहते हैं. आप उसका भी ग्रोथ देखिए 2020 से and till 2022, what is expected?
right? And corporates have taken a conscious call to invest more on digital advertising. ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का बजट वो शिफ्ट करके अभी डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जा रहे हैं. थैंक्स टू कोविड ये नंबर और भी बढ़ गया है, बिकॉज आपके घर में न्यूज़पेपर आना बंद हो गया था, टीवी तो फिर भी देख रहे थे, बट न्यू एड्स और मे बी न्यू प्रोग्राम्स ऑन टीवी डिड नॉट हैपन, बिकॉज शूट के लिए भी तो बाहर जाना होता है ना, राइट? सो वो सब कुछ नहीं हुआ. इसके लिए कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वर्ल्ड वाइड वेब एंड डिजिटल फिल्म्स बनाने लगे, राइट? उसके लिए एडवर्टाइजिंग करना है, सो डिजिटल मीडियम्स यूज करने लगे. सो डिजिटल मीडियम्स में आपके नॉट ओनली सोशल मीडिया कम्स, बट देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस, देयर आर मेनी वेबसाइट्स, देयर आर मेनी पब्लिशर्स which are there, and to be seen on all the platforms, you have to be out there on internet to place your product, to place your ad, to get yourself known about. And this digital advertising industry has grown by 22.47% at a compounded annual growth rate, which is a huge shift. Moving on, I would also want your attention on the left hand side figure. ये हमारा जो टोटल एड स्पेंड होता है डिफरेंट मीडिया पे, वो आप एक बार देखिए. टेलीविजन अभी भी हैज टेकन अ लार्जर शेयर ऑफ द पाई, राइट? 41%. अभी भी बहुत सारे घरों में लोग टेलीविजन ही देखते हैं. न्यू एज मीडिया विच इज डिजिटल मीडिया इज गेटिंग एक्सेप्टेड, बट it is not there with many people. हमारे millennials, Gen Z, for that matter, now till the age of 45, 50, abhi 60 plus bhi they have started using digital, but still the growth rate is slow as compared to television, is what I'm trying to say. Print आप देखेंगे, print is 25% of the share. टेलीविजन 41 है, डिजिटल 28 है, प्रिंट से ऊपर हो गया है. बहुत सारे घरों में भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स बंद हो गई, राइट? रेडियो इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट 3%, एंड फॉर दैट मैटर सिनेमा तो ऑलमोस्ट 0.5% है. एंड ऑल्सो इफ यू मूव टुवर्ड्स योर राइट ग्राफ, आप देखिए 2016 से 2022 ऑलमोस्ट 21 to 5 years. TV is almost stagnant from 40% to 39%. बीच में 41% भी हुआ है, but there is a dip. Then if you move to print, it has been on a decreasing trend from 35% to 21%, and so as others. But if you look at the topmost, which is the digital one, it has shown an ever increasing growth from 12% to 34%. So that is the landscape of digital, and that is where we are heading. Moving to the next slide. Ma'am, ये जो digital growth है, is it because of the pandemic situation? Because I can see 2020 से I mean, in fact, mid of 2019 to 2020 से जो growth start हुई है वो exponentially जा रही है. Yes, definitely, because जैसे मैंने आपको बताया, other mediums were almost stagnant. Television देख रहे थे लोग, but कितना बार आप repeat ads देखोगे, बार repeat programs देखोगे, right? For getting newness to you, people have to step out to studios, get themselves filmed, and then they will come out to you for your viewership. राइट? सो वो बंद हो गई थी, तो बट स्टिल आप टेलीविजन को भी देखोगे तो नेटफ्लिक्स पे एड हो, बट ऑल ऑफ दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिजिटल, राइट? यस. सो pandemic is definitely a big factor, and many corporates have capitalized on that. So your observation is pretty pertinent, is what I would say, that pandemic के बाद growth rate बहुत बढ़ गई. Any other question? No, ma'am. Thank you. I think you can continue, and then Yes, at the ma'am. end take up the questions. Yeah, at least I got a break to
take another sip of Yeah. suddenly thoda kharash बढ़ गई. Okay. You can take a The moment. next slide. हाँ. I'm sorry, but I'll have to take a break now. ऐसे बीच में. कोई दिक्कत नहीं. Okay. Yeah. So again the same thing on this slide. Digital media का growth आपको दिख रहा है 5 सालों में. The rate at which it was increasing in earlier years in 2017 and 2018, there was a dip in terms of percentage in year 29 and 28. Growth percentage rate की बात मैं कर रही हूँ. But then again 2020 onwards, आपने जो observe किया है March onwards, suddenly वो आप देखो बिल्कुल straight line जा रही है, right? So that increase has happened and all of us are seeing the benefit of it. It has not only benefited corporates in terms of businesses online, but also it is giving rise to more career opportunities. Yes. Again, if you talk about the formats, right? Online में, digital में, कौन सी चीज ज्यादा देखी जाती है? Where do people spend their time? लोग कहाँ पे ज्यादा समय बिताते हैं? तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 29% of the universe spend their time on social media, right? Then very close to that, they also believe in watching videos, either for their entertainment consumption, for knowledge consumption, be it anything. वो अभी images, static, text लोग पढ़ना कम चाहते हैं. उनको लगता है वीडियो देख लेंगे, they are more comfortable, and it is very true also. जब आपको वो कैप्सूल फॉर्मेट में सारी चीजें वीडियो फॉर्मेट में मिल रहा है, तो people think that it is a very viable option to kind of watch and get either entertained or seek knowledge, right? मैम आई वुड लाइक टू ऐड ऑन वन थिंग कि एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से वीडियो ने रेवोल्यूशनाइज किया है लर्निंग कंसेप्ट्स एंड रिलेटिंग टू दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल. आई मीन मैम प्राइमरी के स्टूडेंट से जो वीडियोस लॉन्च होना शुरू होती हैं, अ लॉट ऑफ स्कूल्स क्योंकि वो ऑनलाइन चले गए इसलिए वो आपको वही वीडियोस दिखाते हैं और वो बोर्ड वाइज अवेलेबल है विद चैप्टर नंबर विद डिटेल्स. आप क्लास और चैप्टर नंबर डाल दीजिए एंड यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ वीडियोस अवेलेबल फॉर दैट स्पेसिफिक चैप्टर. Yes. Definitely yes. And ये और भी बढ़ गया है पैंडेमिक के बाद, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं था ना हाउ टू काइंड ऑफ एंगेज योर स्टूडेंट्स और बच्चों को पढ़ाई कैसे कराया जाए, और कोई ऑप्शन ही नहीं था. सो मोर एंड मोर पीपल, द एंटायर एजुकेशन सेक्टर गॉट इनटू वीडियो मॉड्यूल्स, राइट? यस मैम. है ना? सो वो एक एरिया है जो कि बहुत ही बूम हुआ है वहां पे, एंड वीडियो इज समथिंग which is the most preferred way of consumption of content also. Yes, it's not only in the student community in the education sector, but across that's the most preferred format. And then display, search, paid, all of that comes later, but social and video is something which is occupying the larger share of the pie. And again the trend report जो आप साइड में देख रहे हैं, you can see the percentage rise, right? Now when you talk about desktop and mobile, आप देखो almost like 2/3, 75% of the share is viewership by mobile. People consume content more, they log into their social profiles more, they also do their searches more through mobile than desktop, correct? And also if you see on the right hand side topmost, search, video and social, I think these are the three things which again occupies the larger percentage in the circle. Mobile has been ever increasing,
and you see, 37%, so now it's become 77% or 75% this year, and it'll go to 77 next year. And there is a decreasing trend in desktop. Now let us move to social media. When you talk about social media, there is plethora of platforms. India में कुछ कम use होते हैं, but worldwide, if you see the center one, बहुत सारी चीजें तो सुनी भी नहीं है. हम इस फील्ड में ऑलमोस्ट 12 साल से हैं, बट हम भी बहुत सारा मतलब इसमें ऐसा होता है, oh, what is this something new which has come, right? As I mentioned initially, it's an ever evolving thing. Different countries have different stuff, but on a generalized thing, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, these are the 4 platforms, and YouTube as a video platform. These are the 5 platforms which is used across world, across India, if you ask me, and across all corporates, right? So, but different platforms have different usages. Something which you do on Facebook is not advisable on Twitter. LinkedIn is again a very serious platform wherein, thought leadership sort of content is put out, wherein people see you as a professional there. So हर एक platform का usage अलग है. YouTube पे videos जाती हैं, Instagram पे more of engagement, more of playful nature, fun type of content जाती है, more of picture display जाती है. So different platforms का different usage होता है. So social media, though, I'm sure you all of you must be knowing that it is a collective term for websites and applications, and they focus on communication, community-based input, interaction. A lot of content sharing happens, and a lot of collaborations and interaction happen, right? I already spoke about platforms which are most common in India, and they are Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest भी है, but Pinterest is like okay, one off. अगर आपको अपने platforms का account बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं, but it is kind of a showcase platform. YouTube है, Snapchat है. Snapchat is something which the younger generation mostly prefer. But if you talk about corporate world, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and LinkedIn, these are the 5 preferred platforms across. And for student community also, and for working professionals, LinkedIn is something which all of us kind of use. Then if you talk about social media type of platforms, then there are social network platform, which is which is helpful in connecting with people. Then there is media sharing network platforms wherein you can share photos, videos, and other media. डिस्कशन फोरम्स भी हैं जहाँ पे आप न्यूज शेयर कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, या किसी ने एक डिस्कशन थ्रेड स्टार्ट किया है तो यू कैन कंट्रीब्यूट योर ओन व्यूज. आप अपने व्यूज वहां पे डाल सकते हैं. यू कैन इंटरैक्ट विद पीपल. देन देयर आर बुकमार्किंग एंड कंटेंट क्यूरेशन नेटवर्क also, and discover, save, and you can discover a lot of content. You can save it for future use. You can share it with your friends and whoever you want to. Then there are consumer review network social media platforms. आपने bloggers, influencers, publishing network का भी नाम सुना होगा. So these are also another type of social media platforms. Then there are internet based platforms, social shopping network platforms हैं. Then sharing economy network platforms हैं. शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में. Used to, I think. Yes. Ma'am, I have a question. Ma'am, are you aware about Clubhouse? Yes, I am. How is Clubhouse beneficial? Because मुझे ये लगता है कि वहाँ हमारी बाउंड्रीज की लिमिटेशन और कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं. हम अपने इंटरेस्ट लेवल को वहाँ पे टॉपिक वाइज सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यू गेट इनवाइटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स. आप जब उस पर जाते हैं, इट इज एन ऑडियो बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम है ना मैम. सो आई मीन हम उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं, क्लब हाउस को कैसे लेवरेज करें? आपको सो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव. आप किस चीज के लिए लेवरेज करना चाहते हैं. अगर आपको
डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, एसएमएम और एसईएम की अच्छी नॉलेज है और मैं उसी में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ. आई वांटेड टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम देयर. So Clubhouse में, so you want to get clients from Clubhouse, वहां से आप contacts लेकर के you want to provide them SEM, SEO and social media services, right? Yes. So उसमें फिर आपको ग्रुप्स में जाकर के और आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना होगा, एंड देन ओनली यू कैन पिक इट अप द कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम देयर. बट आई वुड एडवाइज दैट इज नॉट द राइट वे, राइट? क्लब हाउस इज समथिंग व्हिच हैज इवॉल्व्ड नाउ. फिर ऐसा लगता है, आई विल टेल यू, if someone will keep barging into me and keep asking me, even if I'm interested, my interest level would go a little bit lower, right? So, I mean, that is not a very, very professional approach of getting connected. So again, it depends on your objective and what sort of connection you would want, right? Social media, ऐसे सब जो है, this can be, these types of services can be otherwise also advertised and you will get good connects there. बट आपको ये सर्विसेज जो है आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रोवाइड करना चाहती है या कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड करना चाहती है? कॉर्पोरेट्स को भी प्रोवाइड करती हूँ मैम. आई हैव अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको मैंने ही पढ़ाया है. सो मैं प्रोफेशनली भी लेक्चर्स दे चुकी हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे. जयपुरिया से ही पढ़ी हूँ, जयपुरिया में पढ़ाया भी है एज अ विजिटिंग फैकल्टी. बट व्हाट मैटर्स इज मैम कि एक ऐसा कॉर्पोरेट हमें चाहिए होता है जो बात पे, आई मीन, आप इंडियन, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये मैम, इंडियन कॉर्पोरेट जैसे मैंने कर्लोस्कर ग्रुप के साथ काम किया है, सेंट्रल के साथ काम किया है, बट देन एक टाइम के बाद वो लोग हेजिटेट करने लगते हैं, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस रिगार्डिंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. दे हेजिटेट टू स्पेंड टू मच, राइट? तो इनिशियल लेवल पर, so I will not completely agree with your observation there. So I'll tell you, if you're approaching a big brand and if you're not going as an entity, if you have a group of freelancers, if you have a name, if you have an organization and you have a credibility towards your organization, then I don't think so any corporate would hesitate to give you business. And can you please continue, then we'll answer the questions at the end. Okay, all right. Okay. So I'll come to that later. So I was talking about types of social media and these are few of them. I think we are running short of time and got a lot to cover. So, these platforms and forums you are aware of, there are, usko detail down maine thoda kiya hai, which probably you can go towards the, later. Yeah. I talk about sharing economy network and the examples of Airbnb, Uber and all of that is there. So basically what I want to say is that the key takeaways when you kind of invest your brand on social media is you get a lot of, brand awareness. You get a lot of brand credibility built up. You connect with customers, right? For which you're longing to kind of understand. Because as an individual, you will not be able to make your brand available. But when you are in social, your visibility, your engagement increases more. And thereby, when they see your activity, the customer loyalty also increases. They also assist in link building exercise, which, you were talking about, like social, SEO activities. Then, you can, once a person has visited your platform audience, there are many, many techniques through which you can again retarget them. And this will help grow your business viral and get more and more customers and drive conversion. Also, these are the social media platforms and Facebook is on top of the chart, followed by Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, as I was telling you. And thereby, Pinterest and TikTok. TikTok is no more in India, but when it was. Then if you talk about digital trends, artificial intelligence is something which is there. Every corporate, everyone is utilizing artificial intelligence. I will not get into it, but I'm sure all of you are aware of what artificial intelligence is. And as you see the statistics, 2 out of 3 customers are already using, so artificial intelligence is one of the digital trends. Then
There is AR and VR. I'm sure you all would be aware of, right? We do a lot of when we run a campaign like these concepts, where you can give them a real feel of a place. Suppose it's, a car is there, then you can, with the equipment, you can tell your customer that this would be your experience when you will get inside the car, or this would be your experience जब आप उस घर में रहोगे, right? So this is it's almost like a near a real thing which you would want your customers to experience. Then there is something which is called voice search optimization, right? I mean, this is also increasing to your laziness. लोग lazy हो रहे हैं, but then voice search is something which has picked up. आपको instantly अगर कुछ search करना है, you just speak out those terms, and those results will be thrown out of the internet on your desktop, and it saves time. It gives you lot of output which otherwise आप ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगा. But this voice search is something which is there, and it is helping evolve customers, brands, in person also, on a day-to-day level. I want to talk to you about a little bit of programmatic. I do not know to what extent you'll be able to leverage it, but this is a form of advertising which is very contextual, very real time. Suppose you have put in certain keywords and you are searching for a pair of shoes, right? The browser will study your behavior through cookie pool and a lot of other things. Pixels are there, and then आपको वो ही एड्स दिखाएंगे जिसके लिए आप सर्च करें. आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आई एम श्योर आपको ना वो शूज के एड्स दिखेंगे. फॉर दैट मैटर, इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ शैम्पू, आप जिधर भी जिस भी ब्राउजर पे जाओगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, so these are all programmatic advertising. Then there are chatbots now, right? आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप उधर डालो and all the chatbot will give you the information there itself. Then there is automated and personalized email marketing. पहले generalized email marketing आती थी, आपको समझ में आओ ये पूरी जनता को भेजी गई है. But now personalized email marketing is a concept which is very humane in nature. आपका नाम होगा, सब कुछ होगा. आपको अगर if you are not very familiar with this concept, आपको लगेगा, for that matter, आप सोचेंगे कि ये अरे इनको मेरे बारे में इतना कैसे मालूम, right? So that is also there. So these are some of the digital trends I wanted to talk to you about. Again, वीडियो मार्केटिंग के बारे में हमने बात करी भी है. So आप देखिए किस तरह से वीडियो मार्केटिंग पॉपुलर हो रही है, and उसके भी कितने फॉर्मेट्स हैं. There is 2D, 3D, there is GIF, ebook, infographic. These are all the video formats, and it is the most preferred format of content consumption. Then you must have must be aware of influencer marketing. Influencer marketing may be depending on the budget. You select your influencers. There could be celebrity influencers. You see Amitabh Bachchan, or for that matter Virat Kohli, all of them doing ads, right? All of them endorsing brands. So celebrity influencers hote hain. Then there are nano influencers, macro influencers, micro influencers, right? So depending upon what sort of content they write, what sort of fields, there are health influencers, tech influencers, lifestyle influencers, food influencers, and also depends on their follower base and on the type of engagement or the percentage of engagement they get on their posts. Uske basis pe हम लोग select करते हैं उनको, and we use them in our campaign. There are other trends also. I do not have the time to kind of talk to you about everything, but WhatsApp marketing is also becoming very popular. Geofencing, location-based marketing is very beneficial to people. Suppose if I want to target a person sitting in Lucknow in a certain locality, I can do that. I can show that person the ad which I want to. Then there is hyperlocal SEO, Quora marketing, content marketing, all of you are aware of, because content is also of various formats. Instagram Reel is something which is now everyone doing. You go on Instagram and you name a celebrity, that person is there on Insta. You name an ordinary person, you look at your neighbor,
you'll find your neighbor also there on reels. Vernacular is also something which has picked up. It is not only English, but Hindi, Bengali, Marathi, usme bhi, consumption is happening. And South Indian languages mein aap dekhoge to Kannada, Tamil and all of that, it is very well received by the community. So these are some of the trends. Again, uske detailing maine kari hui hai so that you can read about it later. Now, about the careers which you can look at in digital, or for that matter social, there is a role of social media marketing manager. Uski qualifications, responsibilities bhi di hui hai, and the expected salary level also. And in terms of strength or the skill set which we look before we hire is also written out here. So there is one profile which is called social media marketing manager. Then there are specialist role of a content marketing manager. Content में भी आप देखोगे तो there are two type. ये लोगों को confusion होती है. One is copywriting role and the other one is content role. And also industry specific role होती है. I am in health and wellness industry. तो मुझे medical writers लगते हैं, मुझे doctors लगते हैं who understand these therapy areas and then they can write about it. So specialist role, this can be considered as a specialist role. Someone who is interested in writing, reading, can conceptualize well, put it down on a piece of paper, should take up this role. Then Mama bata rahi thi SEO specialist, that is also a role, and that is again comes under a technical sort of role. Uski alag skill sets hoti hai, and salary, starting level salary ki main baat kar rahi hu. This is what you get. Then there is digital advertising specialist. आप SEM की बात कर रही थी, वहां पे भी होते हैं different sort of advertising specialist we need. So this is another role. Then content writer and copywriter के बारे में मैंने बात किया है पहले. Graphic designers लगते हैं हमें at various level, junior level, and as you progress further, you get elevated to an ACD level and ECD level. ACD is assistant copy director, creative director, and ECD is executive creative director. Then there is a web developer required who understands JavaScript, HTML. So these are few of the skill sets which the person should be having. UI UX specialists lagte hain. Again, the skill set is mapped out here. So net, this is basically a structure of a team, digital team within the marketing team of any organization. Typically, CEO would be there, which will have many other portfolio, and digital would be one of the portfolios which he would or she would be handling. Then there will be ideally a VP who would be controlling the entire dynamics of the SBU. Then they will have digital manager, depends upon the turnover of the SBU. You can have one digital marketing manager or two different, digital marketing manager. Social media manager would come under digital marketing manager. An SEO specialist, search engine marketer, inbound marketing, depends upon the portfolio of services which you are providing. So basically these are that. Quickly moving, I think it's 9 almost. These are some of the institutes. If you want to quickly do a course and understand basics of social digital, these are some of the institutes from which you can learn digital marketing and social media marketing. But if you really want to go one level above, I would recommend these institutes. Xavier Institute of Management and Research, Mumbai, also is fairly good. MICA is something which is now everywhere because of a lot of advertising they are doing, and they've also got tie-up with Upgrad. Symbiosis was there, and it's been there since ages. So these are some of the institutes, and they've got good courses there. Some of the free certification courses I would recommend is inbound marketing, content marketing, and email marketing certification by HubSpot. Google AdWords certification, analytics, and Wings Ad certification. ये आप कर लीजिए, free course है, आराम से करिए,
बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप. Then, as I had mentioned, do's and don'ts for students, for job seekers, for employees on social media. So, for students, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप नहीं पोस्ट कीजिए, इलीगल एक्टिविटीज का कुछ भी पोस्ट नहीं डालिए, डू यूज प्रिवेसी सेटिंग्स एंड फॉलो पासवर्ड रिकमेंडेशंस. डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड. सोशल मीडिया में बहुत कुछ होते हैं, सो अ प्रॉपर गाइडेड थिंग इज समथिंग विच यू शुड बी बिलीविंग इन, यू शुड बी इंडल्जिंग इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. Because कई बार disasters हो जाते हैं through social media. I'm sure all of you would be aware. So you have to be very, very cautious about when you are putting out stuff there. Because internet पे एक बार जो चला जाता है, I mean, it is there available. You can find it out, right? So आप ये मत सोचिए कि मैंने उसको एक मैसेज भेज दिया, वो भेज दिया, डिलीट कर दिया तो वो चला गया. No, it has lot of versions there already stored. Do be very positive when you are writing something. आप सोचो कि लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, है ना? So it will also create your imagery. Correct? For job seekers, LinkedIn is something which I have, someone is making drawings on my sheet, Ashwin. All right. So I think he's getting bored. Don't worry. So LinkedIn is something which you should be using. Then, you are posting something which people are seeing. So you have to be very mindful of the fact that what you are writing. And it shouldn't be like, it's, going all over the place. It shouldn't come out as a bragging thing. कि आप अपनी तारीफ करे जा रहे हो, ये फीलिंग नहीं आए. जो भी दे रहे हो आपको ये सोचना है, आप अपने बारे में तो बता ही रहे, but people are also gonna read what is the 1, 2, 3 thing which you are telling to the world. What are you teaching them, right? What is the takeaways for them, right? So you be mindful of the fact what you are posting. For employees, और भी सारे चीजें stringent हो जाते हैं because आप social पे डाल रहे हो. Not only you are carrying credibility about yourself, but also about the organization you belong to, because organization का logo है आपके channels पे, right? So you have to be very, very careful of what you are putting out there, right? Even if you are putting your own thought process, it has to have a disclaimer that this is your personal view. You are not talking on behalf of the organization, right? And the most important point is that अपने clients को आप social media के through advice मत दीजिएगा. If you are representing an organization, आप personally क्या करते हैं, no one has to kind of bother about it, but as an organization, you have to be very careful. Personal branding का मैंने आपसे पहले भी बोला था, you should be and I endorse, and you should also be promoting yourself, right? So there are various ways how you can be there on social. You can blog. There's a Dr. Vijay makes a lot of videos, and he has his own YouTube channel, and there are so many subscribers, and he gets so many views. So something of that sort also you can do. You can select a topic of your own which interests you, and you can start your channel, start making videos. You can start publishing a book. You can start with an ebook, right? Instagram is something which people use, right? But then it has to be also used with many do's and don'ts, right? But then that can also be a medium wherein you can do personal branding, public speaking. You can participate in meetups. You can look up for various speaking opportunities which you come to know through these social events which keep happening, and this is one of those. And when you are kind of promoting yourself, you have to be sounding very authentic. You have to be very true to yourself, right? At times you will get a flack off on on your personality कि यार ये क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, but then ठीक है, अभी public है तो बोलेंगे ही. आप उसका कितना बुरा मानना है, it all depends on you. But if you are very authentic, आपको लग रहा है जो आप बात कर रहे हैं which is very right, you shouldn't be scared of not talking about it, is what I'm saying, right? Be real and transparent. अगर आप अपना personal branding अच्छे से करेंगे, then you will get an opportunity to train others.
You can get consulting opportunities, lot of business you can get from there. You can have your dream job. People will start trusting you. You'll get a lot of fame, right? And you can become a role model. At times, you become, so if your stars are good, you can become a celebrity as well. Huh? So I would request you to invest time on personal branding. Huh? Think of one section, think of one area जहाँ पे आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं उसमें, and आपके qualities लोग नहीं जान रहे. You can use social for promoting yourself, right? Dr. Vijay has done wonders, and he's been promoting his training modules. So you can also inspire others to that. Correct? Now, small and medium scale and large scale, there is always a question. Small scale industry को क्या करना चाहिए, medium scale industry को क्या करना चाहिए, या वो उस तरह के business, how did they should be utilizing social media. So there is nothing like small businesses को इतना ही करना चाहिए या big business को इतना करना चाहिए. It all depends on your pocket size and the budget, right? And more so your confidence and your knowledge. So there is a journey. There's a buyer journey which is across all businesses, be it small, medium or giant, right? And awareness stage पे क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन में क्या होना चाहिए. एक बार आपके ब्रांड को लोग जानने लगेंगे, एंड आउट ऑफ 5 कंपटीशन ब्रांड आपके ब्रांड को बोलेंगे अच्छा ठीक है, आउट ऑफ दिस मैं एक सनसिल्क कंसिडर करूं या फिर डव शैम्पू कंसिडर करूं. वो स्टेज पे अगर जो आ गया, जो कि आप भी उस कंसिडरेशन स्टेज पे हो, हाँ, आपका भी ब्रांड उस कंसिडरेशन में स्टेज है, तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए. हाँ, what should be your strategy, what social activities you should be doing, what sort of social KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको चेक करते रहने चाहिए. हाँ, अगर आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, आपकी लाइक्स बढ़ रही है, आपकी एंगेजमेंट लेवल बढ़ रही है, फॉर दैट मैटर आपने एड्स करा हुआ है, उसके ऊपर गुड CTRs, इंप्रेशंस, रीच आ रहे हैं, वेल एंड गुड. बट उसको और कैसे इंप्रूव करना है और कैसे ऑप्टिमाइज करना है, देयर इज अ थियरी, देयर इज अ साइंस, देयर इज अ कैलकुलेशन बिहाइंड इट. So when you do the courses, you'll get to know how do you have to keep moving on and upgrading your concepts, your activities at various stages of buying journey. For that matter, एक बार डिसीजन हो गया कि मुझे डव शैम्पू ही खरीदना है, तो फिर आप क्या एक्टिविटीज करोगे, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करोगे. अगर आपने फेसबुक पे सिलेक्ट करा हुआ है, फिर आप टारगेटिंग कैसे करेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट आप डालेंगे. कंटेंट में भी आप जिफ डालेंगे या कराउजल डालेंगे या स्टैटिक डालेंगे या वीडियो डालेंगे, वो सब कुछ सोचना पड़ता है, राइट? फिर उसका एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे. अभी ऑर्गेनिक कंटेंट का जो आप डालते हैं, नॉट इवन 1% ऑफ योर ऑडियंस इट रीचेस आउट टू. यू हैव टू डू प्रमोशन. प्रमोशन में भी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रमोशन होते हैं. बूस्ट प्रमोशन होती है, देन देयर आर प्रोग्रामेटिक, वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट, एफिलिएट होती है, नेटिव होती है, लॉट ऑफ परफॉर्मेंस based marketing happens. फिर adoption and advocacy stages में what are the lineups. So ये कुछ आपको सोचना पड़ेगा. And what after you've done your activities, you've invested your time, money, effort, what sort of business impact it is bringing to the organization is also something which gets measured. आपने analytics का नाम सुना होगा. There are various tools जो आपको आपकी एक्टिविटी के रिजल्ट मेजर करके एक रिपोर्ट बनाती है, and that report is something which gives you the ROI of the entire spend. जितना पैसा आपने उस एक्टिविटी पे डाला है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल हुआ या नहीं है, whether it is a success, whether it is a loss, whether it is a gain, all of that gets calculated and the report gets presented to your senior management, right? So the business impact is something which is very important towards any activity which you do. And the extent आप जो बोलोगे ना, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, आपको पहले थोड़े से ही स्टार्ट करना है, उसके रिजल्ट्स देखना है, देन यू वुड वांट टू इंक्रीज योर एक्टिविटी. सो मे बी अ स्मॉल बिजनेस, अगर आपके पास 1 लाख ही है in a month to spend on social, then you can start with Facebook, Instagram, and not LinkedIn I would prefer, but a YouTube, right? ये 3 प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कीजिए, इन्वेस्ट करिए, देखिए आपको क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. And as you progress, then you can start including other channels.
YouTube चैनल इज अ मस्ट बिकॉज उसमें आप स्मॉल वीडियोस डाल सकते हैं, बट दोज वीडियोस आर समथिंग, उसकी क्वालिटी आपको देखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है. इट शुडंट बी लाइक मोबाइल से कुछ बना दिया डाल दिया, then people will not take you seriously, right? So all of that has to be taken care of. And if you talk about success mantra, there's no thumb rule, but these are the 20 things which I thought you should be doing, which will help you get a better ROI, if I can use that word, return on investment of your efforts, which you will be putting on social media, either marketing, optimization, whatever you want to say. But branded पेज बनाइए, उसको ऑप्टिमाइज करते रहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट डालिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्टिंग शुड बी मोर. इट शुडंट बी लाइक आज आपने आज एक पोस्ट डाला और फिर 15 दिन भूल गए. 15 दिन में आपके जो ऑडियंस जो आपके फर्स्ट पोस्ट को देखा वो आपको भी भूल जाएगी. सो यू हैव टू कीप पोस्टिंग, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज योर एंगेजमेंट विथ योर ऑडियंस, राइट? आप देखिए कि किस तरह का कंटेंट वो देखना चाहते हैं, व्हाट इज द शेयरेबिलिटी ऑफ दैट कंटेंट. वो आपका कंटेंट देख के सुन के अगर उनको अच्छा लगा है, and if he is wanting to share it to his set of people, his set of friends, then you feel कि अच्छा you are in the right direction, right? Then use relevant hashtags, because one is you can from your own hashtag see कितने लोग आए, हाँ, किस तरह के लोग आए आपके कॉन्टैक्ट में. So that has the analytics base in it. Secondly, if you're also putting somebody else's campaign hashtag, or if there is some general thing which is happening on a very larger level, like a corporate, like a global level, or in some policy levels on a government level, वो अगर यूज करें तो आप उस भीड़ में नोटिस होगे. You understand what I'm saying? हाँ, there is a national polio day. National polio day में अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ बोलना चाह रहे हो उस विषय में, तो आप वो हैशटैग यूज करिए. जब उस हैशटैग की एनालिसिस होगी तो आपका कंपनी का या फिर आपका पर्सनल प्रोफाइल में उसमें नोटिस होगा, ओ अच्छा, दिस पर्सन इज आल्सो देयर, लेट मी आल्सो सी व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दैट पर्सन इज writing. Maybe a corporate can pick you up by the level of influence you have created, right? So that is another way of branding yourself, branding your organization, right? Again, I mentioned keep it real, ask relevant questions. You can also run contests and giveaways. That is another level of engagement. And real-time interaction is also very important. अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा हो और आप उसके ऊपर 5 दिन के बाद जवाब दिया तो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, right? It requires lot of monitoring. It requires lot of follow-up. There's a lot of learnings from analytics, because basis the learnings, you can have your marketing strategies crafted, right? And all of these activities, they require a lot of patience. Patience चाहिए होता है. आपको ऐसा overnight result नहीं मिलेगा. अरे मैंने ऐसे कर दिया, मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा, उसको देखो उसको मिल गया रिजल्ट. ऐसा नहीं होता है. Patience रखिए, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सीखिए, आप अपने कंपटीशन को केयरफुली वॉच करिए, वो क्या कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, एंड मुझे उनसे अपने आप को कैसे बेटर करना है. यू हैव टू कीप थिंकिंग एंड कीप स्ट्रेटेजाइजिंग. सो ऑल ऑफ दिस इज नॉट अ टास्क, राइट? इसको अगर आप फन वे में लेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस, राइट? That's about it. Thank you so much. I think, did I go overboard? Yeah, it was great. Thanks a lot. So much content is there. Few things are. I think we need to call you again regarding personal branding and other things, because a lot of things are there which can be discussed further as far as personal branding is concerned. तो आपने कई अच्छा डिस्कशन किया, करियर के बारे में काफी अच्छा बताया आपने, ट्रेंड्स काफी अच्छा बताया, डूज एंड डोंट्स काफी अच्छे बताया, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे हैं जो कि जॉब सीकर है या फिर ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग डूज एंड डोंट्स ही नहीं जानते कि उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या करना है. और वो लोग कई बार तो हमने कई लोगों को देखा ट्रीट करते हैं, वो फेसबुक भी वही उनके लिए है और लिंक्डइन भी वही है, जबकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग है. एक पर्सनल प्लेटफॉर्म है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है. तो कई बार ऐसा भी लोग कर देते हैं. तो ये सब चीजें जानकारी बहुत जरूरी है. ऋचा मैम, आप कुछ पूछ रही थी क्वेश्चन, मैम से पूछ सकती हैं आप अभी.
रिचा मैम ने ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है मुझे, मैं देख तो नहीं पा रही थी, बट आई वाज काइंड ऑफ एबल टू आइडेंटिफाई द वॉइस। एक्चुअली रिचा मैम हमारे साथ फैकल्टी एक्सपर्ट हैं जो हमारे लोग डिलीवर करते हैं साथ में। वंडरफुल। हाँ, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ फ्रिक्वेंटली वी शुड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और क्या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए? तो आपका फिर अगेन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव यू डिफाइन, राइट? करेक्ट। अगर आप एज एन इंडिविजुअल पोस्टिंग पूछ रही हैं और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा पोस्टिंग आप पूछ रही हैं? एज एन ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग और एज एन ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती हूँ। एज एन ऑर्गेनाइज, उनको आप म्यूट कर पाएंगे क्या? वाणी नहीं हो पाएगा। अरे वाह, हाँ, न्यू जगह खाली होकर दिया ना, मैंने कर दिया म्यूट। सो आइडियली अगर आप बोलेंगी रिचा, तो फॉर इन अ स्ट्रेटजी फॉर अ कॉर्पोरेट, मैं इन अ मंथ 8 पोस्ट के से ज्यादा अलाउ नहीं करती हूँ। बट अगेन इट डिपेंड्स, इफ इट इज अ लॉन्च जब होता है तो आई डबल इट अप, बिकॉज मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करके लोगों को बताना है। बट इफ इट इज अ रेगुलर हाइजीन वर्क विच इज हैपनिंग, तो 2 पोस्ट in a week is good enough. Right? Should be limited to Saturdays and Sundays जहाँ पे visibility ज्यादा आती है, या फिर मुझे कोई भी 2 दिन डिसाइड कर लेने हैं और हर वीक उन्हीं 2 दिन में पोस्ट करना है? नहीं। So when you go to your Facebook page, when you go to analytics, आपको दिखता है when your audience is online. Yes. Right? तो वो देख करके तभी आप अपना पोस्टिंग करिए। हाँ, there are tools which schedule your posting, right? अगर आपको सैटरडे संडे को करना है, and if you don't have a person available, because corporates में हम सैटरडे संडे काम नहीं करते, but yet I want my post to be visible to my audience on Saturday and Sunday, तो हम schedule करके छोड़ देते हैं। जी हाँ, ठीक है। So आपको देखना पड़ेगा आपकी कब audience online है, then only you have to do that. And आपने मुझसे एक और सवाल किया था कि same post हर एक चैनल, no, I wouldn't। देखिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम स्टिल यू कैन, हाँ, बट ट्विटर के लिए देयर इज लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज लिमिटेशन, तो आपको ट्वीक करना पड़ेगा। लिंक्डइन इज अ कंप्लीट नो। सेम पोस्ट अगर आपने फेसबुक पे डाला है, सेम ऑडियंस वहां पे नहीं जाती है, दे आर वेरी सीरियस ऑडियंस, राइट? सो आपको बिल्कुल एक थॉट लीडरशिप स्पेस में जाकर के वैसे कंटेंट आपको बनाकर वहां पोस्ट करना है। फ्रिवलेस कंटेंट जाएगा, एक बार आपका परसेप्शन बन जाएगा, nobody would want to come on your page on LinkedIn, right? Because वहां पे बहुत सीरियस ऑडियंस रहते हैं and they come with certain objective in their head. मैम हैशटैग से रिलेटेड भी बताइएगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग लिमिटेशंस होती है हैशटैग की, मतलब ऑल्दो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करती हैं, बट देन शुड वी स्ट्रिक्टली फॉलो इट, बिकॉज हम वो फॉलो कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म ने हमें स्पेस दिया है, राइट? और जो उसने अलाउ किया है, क्या हमें उसी से स्ट्रिक्टली स्टिक रहना चाहिए? Not necessarily, see, because one is that these platforms are not that intuitive to kind of give you कि आप क्या बात करना चाहते हैं, right? You know, so at times you have to tweak your hashtag accordingly. Suppose and hashtag अभी you shouldn't be using बहुत लंबा hashtag, because फिर वो ना उसका impact खत्म हो जाता है, people bore हो जाते हैं, you know, the impact which you can create within 2 or 3 seconds, right? That is very important. So it has to be that catchy. तो आप उसी तरह से बनाइए अपना hashtag. You have to be within the realms of the platform dynamics for sure, but you can tweak it as per your campaign, as per your objective, as you know, average campaign. Yeah. हैशटैग भी हम रिसर्च करने के बाद फिर एड ऑन करते हैं रिलेवेंट टू द टॉपिक जिस पर हमने पोस्ट बनाया है। सो शुड एन एवरेज कुड बी 5 हैशटैग्स जिसको हम हमेशा रिसर्च करके रखें फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट। मिनिमम तो 5 यूज ही कर ली, मिनिमम तो 5 यूज ही करना चाहिए, बट जैसे ट्विटर आपको अलाउ करती है 10 का, एंड आपको लगता है कि आप 10 रेलिवेंट वंस कर सकते हैं। ऑल्सो हियर आई वुड सजेस्ट रिचा कि आप कीवर्ड प्लानर में देखिए सजेस्टेड कीवर्ड्स और क्या आ रहे हैं, किसकी वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, उसके बेसिस पे यू कैन यूज दोज, ओके, राइट? क्योंकि उनकी सर्च ज्यादा है, फिर उनकी सर्च जब होगी तो फिर आपका हैशटैग भी उसमें फीचर होगा, राइट?
So you will be seen there. That is a part of your SEO activity. ओके मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज दिस मैम, फेसबुक में जब हम कन्वर्जन की मार्केटिंग करते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं फॉर अ कन्वर्जन, इट कुड बी अ लीड जनरेशन, इट कुड बी अ सेल, प्रेफरेबली जब ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं उनके प्रोडक्ट्स का, तो हम कई बार इनिशियल लेवल पे अगर हमने स्टार्ट किया है तो हम लर्निंग फेज में जाते हैं, अगर हमने 50 कन्वर्जन नहीं कर पाए हैं विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक, तो उस लर्निंग फेज से कैसे बाहर निकले? बिकॉज उस टाइम पे मैम वो एक इनिशियल फेज होता है, जो क्लाइंट होता है वो पैनिक करने लगता है बिकॉज उसके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट डिडक्ट होता जा रहा है लेकिन उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। Correct. So that way रिचा आप मांगेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ ऑल दीज इयर्स, एक बार लर्निंग फेज में चला गया तो आपको उसको ना अबैंडन कर, बिकॉज आप उस पर कितना भी स्पेंड करोगे, इतना भी टाइम, एक बार मतलब आपका देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर, राइट, व्हिच इज व्हाई द कैंपेन हैज नॉट पिक्ड अप. Either your content is not good, either your sorry आपकी आवाज में रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज यू हैव मेड, एम आई ऑडिबल मैम? yes you are. ओके ओके, फेसबुक में रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज यू हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर एड ग्रुप और एड, दैट्स व्हाई यू आर इन अ लर्निंग फेज. दैट मीन्स कि फेसबुक इज लर्निंग कि how your ad is going to perform or how your target audience is going to respond to your ads. ठीक है, सो इस लर्निंग फेज में फिर भी रीच और इंप्रेशंस हाई रहते हैं बट कन्वर्जन लो रहते हैं. ठीक है, तो मैम ROS पे इसका इम्पैक्ट आता है और क्लाइंट की साइकोलॉजी पे भी इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आ जाता है. इसीलिए मैम कह रही थी कई जैसे कर्लोस्कर ग्रुप या सेंट्रल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आया, बट देन बाइसा क्राफ्ट के लिए जो कि राजस्थान की ई कॉमर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको वो पैनिक मोड में आ गई थी. ठीक है, सो उस वक्त मैंने कहा मैम एड कॉपी बना देंगे एंड देन इट विल वर्क, वी वोंट कंटिन्यू विद दिस एड, बट देन वो पेशेंस लेवल छूट जाता है क्लाइंट का. तो वही है, see if the patience is not there and if you have tried all your permutation combination, right, आपने एड कॉपीज बना दी, चेंजेस कर दिए उसमें, एड फटीग भी आता है, राइट, बार बार वही, तो यू हैव टू कीप चेंजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर टेक्निक्स, बिड लेवल भी आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, राइट. वो सब होने के बाद भी इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग यू हैव टू स्क्रैप इट एंड अगेन रीस्टार्ट, इज व्हाट आई हैव सीन इन ऑल दीस should we इयर्स. also opt for creating two three campaigns, I mean at the same time, so that अगर एक campaign perform नहीं कर रहा है तो दूसरे campaign का ad group perform Absolutely. मतलब बिल्कुल चेंजेस जो हमें करने चाहिए ना. ओके ओके, dependency on one shouldn't be there ever. हाँ, got it ma'am, thank you ma'am. Yeah, I think it has been Your a session was, session. and your session was quite enlightening. I've learned a lot of new things and I'm definitely going to search it further. Anytime, Richa. Thank you so much. But I am feeling little unsatisfied. One is that वो खांसी आ गई मुझे. Secondly, मैं जितना बोलना चाहती थी वो नहीं. Dr. Vijay, I think you'll have to call me again. Yes, definitely we would love to. Yes ma'am, we'd love to. I think Shivani has got a question. Shivani Khatwani. Yeah, you want to ask something? Shivani? Am I audible, sir? Yeah, you are audible. Yeah. Hi, ma'am. Hi, Arunima, ma'am. So, I'm a student at Uran Digital. So, I'm not very well versed with the digital marketing concepts as of now. However, I have a question on personal branding currently. Okay. As you spoke around personal branding, I think it's extremely important before you start any kind of journey, right? Be it freelancing or it also helps in jobs sometimes, right? Absolutely. So, I feel like creating content or maybe writing about a lot of things. And currently, I'm not into marketing as a working professional. I'm in some other business domain. Okay. So my question is, should I basically write about or maybe create content around marketing because I want to create or take it up as a side hustle, or should my content revolve around the business domain that I have experience in? Because if I talk about LinkedIn, I do have a lot of people from my own organization, and from the same domain. So will that be conflicting? Because of course, those are the stakeholders who will be reading my content. So Shivani, one is that personal branding I told you is very important, because there
you are, though people are not talking to you, and since they're not talking to you, they wouldn't understand you as a person, right? And they wouldn't understand what your experiences are, what your traits are, what your business line of business is, right? So personal branding is something very important, and LinkedIn is what I believe you asked, right? That what sort of content you should be putting out on LinkedIn, whether it be your business related, what you are already kind of pursuing, or marketing. But don't you think so? There is a correlation between these two. Your business also needs marketing drivers, right? Right, absolutely. So I think you have to do marketing for your brand, for your company, right? So you have to marry both, and then you start have to, think on those lines. Marketing कैसी करनी है? Marketing is a very very generalized term, Shivani. Marketing मतलब आप, there are various aspects. Marketing, sales, marketing में आप क्या करना चाहते हो? There are many, and Dr. Vijay knows about different levels and different types of marketing. So I would recommend LinkedIn as a platform. You have to think through what you want to write about, right? Marketing as a general, don't write, because there are many players in that field, right? And you will not even reach there. So आप वो area सोचो, and you link which is your business and you are good at it. So आप उसको अपना brownie point बनाइए, and then you link marketing to that. Okay. So that would be the differentiator, is what I would say. Okay, understood. Was I able to answer your question, Shivani? Yes. You made it pretty clear, because I've always wanted to write, and it hasn't been very clear as to what should I write and where should I write. Because for Instagram, I think I wouldn't be getting that kind of audience, and it will not my thoughts will not communicate with them at the level that I want to. I've always wanted to do that, and again, I am into human resources currently, and I feel if I am into human resources, I have people from my organization added to my LinkedIn. If I start writing about digital marketing because I am interested in that field, will that be conflicting or not? No, not at all. No, not at all. There is nowhere written on any contract, on any agreement, on any appointment that you can't write about any other subject. I just had this thought regarding my branding as an employee to that organization. No, but that is something which you are writing as an individual, not from the organization page, right? So you are free to write. There's freedom of expression. Okay. Thank you so much, ma'am. Welcome. Okay, I think it has been a quite enlightening discussion. Okay, a lot of questions were there from Richa ma'am also, and the other participants also. We are trying to guide all the participants who are with us, okay, on various platforms, okay, so that they can be better off. Are there questions in the chat box also, Dr. Vijay? I think there was one question. Okay, there was one question. Social media marketing में हिंदी का भाषा का अधिक उपयोग कैसे करें? आप हिंदी में लिखना शुरू कर लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, आप हिंदी में लिखिए। एंड मैंने रीजनल लैंग्वेज की बात करी है, आपके जो ऑडियंस है, जो लोकल लैंग्वेज में आपको सुनना चाहते हैं, वो बहुत खुश होंगे, आप लिखिए हिंदी में। हाँ, आजकल तो वर्नाकुलर काफी बढ़ गया है, और आजकल मैं देख रहा हूँ हिंदी का कंटेंट काफी लोग यूज भी कर रहे हैं, और रीच काफी बड़ी है। बिल्कुल। मुझे लगता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है कि आप किस लैंग्वेज में अपनी बात उनको समझा पा रहे हैं। सो लैंग्वेज इज नो बार। यस, एब्सोल्युटली। एंड जब आप लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग, लोकेशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आई वुड रेकमेंड आपकी जो एड कॉपीज होती है, जो पोस्ट कॉपीज होती है, आप वो हिंदी में लिखिए। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे ऐड किया है अभी जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो कई बार मैं जो पोस्ट लिखता हूँ, जैसे सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो डिजिटल मार्केटिंग वो हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग जो कोर्स डिलीवर कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिलीवर कर रहे हैं, मतलब एकदम अंग्रेजी में नहीं डिलीवर कर रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि हम लोग प्राइमरी नॉर्दर्न इंडिया के बेल्ट को पकड़ा है, जहाँ लोग हो सकता है कि अंग्रेजी बोलने और समझने में एकदम 100% उतना उनकी ये ना हो, तो उनके लिए
कंफर्टेबल भी फील करेंगे। उनको ऐसे इंग्लिश में सब कुछ बोलिएगा, मे बी आई डोंट, आई एम सॉरी अगर आप लोग को लगा होगा ऐसा मैंने कुछ किया, बट नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपने तो काफी अच्छा उसको एक्सप्लेन किया हर लेवल पे। मतलब विजय सर, कंफर्टेबल फील मेरा करते एक हैं। क्वेश्चन है। अच्छा विभूति जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं एक मैम, हाय मैम, मैं, मेरा नाम विभूति है, मैं डिजिटल, अपना उड़ान डिजिटल का एक स्टूडेंट हूँ। अभी Okay. थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरा एक चैनल बिजनेस है। चैनल बिजनेस मतलब टाटा टेली के सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन था, लाइक इसके अंदर जो जैसे आपने बताया कि पर्सनल सोशल मीडिया में जाना चाहिए, या जैसे मैं चैनल बिजनेस करता हूं, तो यदि मैं चैनल को प्रमोट करता हूं तो उस हिसाब से टाटा टेली प्रमोट होता है। मेरा उसमें लोग मेरे को किस टाइप से पहचानेंगे या मेरे को किस टाइप से जानेंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई, इसका मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि मैं पर्सनल चीजों को डेवलप करूं या टाटा टेली को लेकर, मैं ब्रांड को लेकर डेवलप करूं। तो ये दो क्वेश्चंस। तो आप उनके मैं चैनल पार्टनर हूँ उनका। चैनल पार्टनर है और आप उनका सर्विसेज सेल करते हैं, राइट? सर्विस सेल करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को, यानी मैं उनको हाईलाइट करता हूँ तो वो लोग प्रमोट हो जाते हैं, मैं नीचे दब जाता हूँ। तो उसको कैसे बैलेंस करूँ? नहीं, वो तो होगा ही, बिकॉज इफ देयर इज अ ब्रांड एसोसिएटेड विथ यू, यू कांट स्टॉप दैट, राइट? बट इफ यू आर अ चैनल पार्टनर, देन but you don't have a name of your organization or whatever. आपका कुछ I, अलग से I आइडेंटिटी। have a organization. I have a channel. I am I have a channel business. But हाँ, if I promote channel as a channel, तो वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता। यदि मैं तो बट ब्रांड को लेके, आप ऐसे विभूति जी नहीं सोचिए। उनका जो नाम है उससे आपके आपके बिजनेस को ऑथेंटिसिटी मिलती है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं सपोज KFC की फ्रेंचाइजी हूँ या मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी हूँ, यस मैम, तो उसकी ऑडियंस मेरे पास आएंगे, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी एक अपना मार्केट वैल्यू क्रिएट करके रखा हुआ है, राइट? है ना? अगर मैं शैम्पूज बेचती हूँ, शैम्पू बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, या मेकअप किट्स बेचती हूँ या क्लोथिंग कुछ बेचती हूँ, ठीक है, एंड मेरे शॉप में जॉकी के प्रोडक्ट्स हैं, बीबा के प्रोडक्ट्स हैं, तो लोग मेरे पास आएंगे ना, बिकॉज वो ब्रांड्स हैं मेरे पास। तो आप इस पर्सपेक्टिव से सोचिए। इफ यू हैव अ नेम एसोसिएटेड विथ यू ऑलरेडी, इट विल एलिवेट योर लेवल ऑल्सो, आपका भी वो बढ़ाएंगे रेपुटेशन। सो आप ये मत सोचिए कि उनके प्रमोशन से आपका प्रमोशन बंद हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक फेसबुक पेज खोलिए, पेज नॉट अ प्रोफाइल। हाँ, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन वी ओपन अ पेज, उसके फीचर्स अलग होते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स अलग होते हैं। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट लाइक टाटा, उसके नाम से करिए, और आप वहां पे अपनी बायो अच्छे से लिखिए। आप बताइए कि आप क्या करते हैं, किस तरह का बिजनेस है, एंड आप अपने जो पोस्ट लिखते हैं उसमें आप क्लियरली लिखिए कि यू आर अ चैनल पार्टनर फॉर सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन। वो आपको नीचे नहीं लेके जाएगा, वो आपको और क्रेडिबिलिटी देगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, मुझे लगता है काफी अच्छा डिस्कशन रहा है और काफी अच्छा क्वेश्चन विभूति जी ने भी पूछा, क्योंकि उनका डिलेमा है कि बिजनेस है और टाटा टेली सर्विसेज है, तो टाटा टेली सर्विसेज को अगर प्रमोट करेंगे तो उनके साथ उनका ये हो जाएगा। और अभी हमारे बैच को अभी हम लोगों ने अभी गूगल का प्लेटफॉर्म बताया है। बाय 15th नवंबर वी आर स्टार्टिंग आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग Okay. प्लेटफॉर्म। Okay. सो वी आर स्टार्टिंग विद फेसबुक, तो उसमें उनको हम लोग ये भी बताएंगे। एक ऐसे तो काफी टाइम हो गया, फिर भी बबीता जी एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। ये लास्ट क्वेश्चन आप आंसर कर दीजिए, एंड नो देन वरीज, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वी आर बोलिए लेट। बबीता जी। बबीता जी, हेलो मैम, अरुणिमा मैम। मेरा एक सवाल है कि फेसबुक पे जैसे मैं अपना ब्रांड एक प्रमोट कर रही हूँ, और उसमें मेरी कुछ स्किल्स भी हैं, और कुछ मेरी कुछ स्किल्स है, कुछ नॉलेज है, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में है। तो अब उसकी कोई इंडेक्सिंग या ऐसे सीक्वेंस किया जा सकता है कि इफ आई वांट माय ऑडियंस टू सी इंगेजमेंट प्रोग्राम, जैसे उसमें मैंने क्विज कर दिया या कोई और नॉलेज वाला क्वेश्चन कर दिया, तो वो सब कहीं एक जगह पे कहीं किसी को दिखे। जैसे मैंने एक दिन नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछा,
एक दिन प्रोडक्ट के बारे में बताया, एक दिन स्कीम लॉन्च कर दी, तो वो सब रैंडमली पर फेसबुक पे एक बार में रहता है। तो उसकी कोई ऐसी मैं इंडेक्सिंग कर सकती हूँ कि किसी एक जगह पे अगर कोई कस्टमर क्लिक करे, एक जगह पे आप स्टोर करना चाहते हैं, हाँ, आप एल्बम फीचर है ना, यू कैन पुट इट देयर ना, एल्बम फीचर। अच्छा, एक एल्बम मैं अपने स्कीम्स की बना दूं और उसमें सारे स्कीम्स डलते जाए। उसको एक मतलब एक फोल्डर में बना के रख दीजिए ना, सो दैट आपको कभी भी सर्च में यू डोंट हैव टू स्क्रॉल इट डाउन ना, वहां पे आपका सब रिपोजिटरी एक जगह रहेगा। आपको उतना तो मोटा मोटा हेडर से यू कैन फिगर आउट ना कि इस मैंने ये वाली कंटेंट डाली है, ये वाली पोस्ट डाली है, तो आप अपने एल्बम बना लीजिए। जैसे हम एज अ पर्सनल दिस भी हम बहुत सारे इवेंट्स करते रहते हैं, उसके बहुत फोटोग्राफ्स रहते हैं, है ना। कई बार ढूंढते हैं तो अभी पूरा आप स्क्रॉल करना शुरू करेगा ऊपर से नीचे, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो वी क्रिएट आवर एल्बम्स एंड वहां पे रखते जाते हैं। कभी भी कुछ ऐसा बैक ट्रैक करना है, देखना है कि कहाँ पे हो, तो यू ओपन दैट एल्बम ओनली एंड देन सर्च फॉर इट। और उस नाम से कस्टमर कैन आल्सो सर्च। हाँ, मतलब जो भी नाम आप डालना चाहते हैं, यू कैन पुट योर नेम और whosoever's name, जिसका रहता है जस्ट एज पर योर चॉइस ना, आप क्या डालना चाहते हैं। ओके, तो हमको लगता है कि नेक्स्ट टाइम वी विल कॉल यू फॉर Undoubtedly, sir. Ma'am, you're most welcome. You have resolved all our queries and concerns regarding social media platform along with the success mantra. So I believe if one person follows the success mantra, he'll definitely going to get returns out of it. I'm pretty sure because all of these have come out of experience of all these years. Like, you know, अभी 10-12 साल से जब से start हुआ है, we've been trying, hit and trial error, and we keep evolving, right? But then over the years there are certain things जो कि लगता है कि हाँ ये तो मतलब something which has to be done, must have होता है। Yes. So, अगर वो उतना भी follow करे ना तो base level achievement आ जाती है। बट अगेन मतलब पीपल शुड नॉट लूज पेशेंस। कई बार होता है अरे मैं करा जा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। हाँ, ये तो डिफिकल्ट मीडियम है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो पीपल हैज टू बी पेशेंट काइंड ऑफ। आप एसईओ का ही बात करेंगे, अगर एक कीवर्ड को आपको करना है, बेयर मिनिमम 3 to 4 months आपको उसके ऊपर एफर्ट डालनी होती है, बहुत आराम से। आप मतलब हम क्लाइंट्स को बोलते ही नहीं, आप बोल जाओ एसईओ स्टार्ट करके 6 months के बाद ही आप पूछना कि व्हाट हैव बीन शिफ्ट। Okay, thank you, ma'am. On behalf of Udan Digital, we would like to thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Time. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Good night. And See it you was soon very again. insightful. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you.